नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ओएसिस नॉलेज पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एनडीए एग्जाम 2024 के लिए करंट अफेयर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम बेसिकली जो पीवाईक्यूज है, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, उस पीवाईक्यू को भी देखेंगे और सराउंडिंग इस साल जो करंट अफेयर्स हुए उसको कवर करेंगे। पूरा करंट अफेयर हम वैसे ही कवर करेंगे। करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे हम डिफेंस रिलेटेड कुछ जो न्यूज है उनको कवर करेंगे। डिफेंस एंड स्पेस रिलेटेड न्यूज। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिससे अल्टरनेट साल हर साल एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP. This IGMDP program was conceived in the year 1983 by APJ Abdul Kalam. By APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट है। वी कॉल इट एज अ पटना। P फॉर पृथ्वी। पृथ्वी इज अ शॉर्ट रेंज, पृथ्वी इज अ शॉर्ट रेंज surface to surface ballistic missile. Prithvi is a short range surface to surface ballistic missile. Then Agni. Agni has the different ranges. Agni 1, 2, 3, 4, 5. Agni is also one of the ballistic missile. Second one is Agni missile. Then now we have the Agni Prime, Agni P or Agni Prime, new version. Then Trishul, short range, low surface to air. त्रिशूल सरफेस टू एयर। त्रिशूल कैसे हवा में फेंकी जाती है, सो सरफेस टू एयर है। अगेन पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस की है। उसके बाद है नाग। नाग इज एंटी टैंक मिसाइल। इट इज वन ऑफ द एंटी टैंक मिसाइल। इट इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। एंड लास्ट वन इज आकाश। आकाश इज ऑल्सो सरफेस टू एयर। हमें आकाश कहाँ पे दिखाई देता है, स्पेस, पृथ्वी के ऊपर, सरफेस एयर में। तो सरफेस टू एयर ऐसे आकाश ऊपर ही देखते ना, तो सरफेस टू एयर ऐसे याद रखो। पृथ्वी को सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी है यहाँ पे, पृथ्वी का सरफेस है टू सरफेस टू सरफेस। ऐसे कुछ ट्रिक्स याद रखो, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। दीज आर द 5 मिसाइल्स दैट आर डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम IGMDP। अभी एक एक कवर करते। धनुष, अभी क्या है ये, धनुष एक मिसाइल है। अ मिसाइल इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए स्पेशलाइज धनुष मिसाइल था। इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पृथ्वी टू। पृथ्वी टू का क्या ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, धनुष नेवी के लिए कस्टमाइज किया गया है। इट इज अ कस्टमाइज एंड नेवल वेरिएंट ऑफ द पृथ्वी मिसाइल। Is a customized and naval variant of the Prithvi missile. Yes, correct. Then has a range of 700 kilometer. देखते अभी ये 700 किलोमीटर कैन बी लॉन्च फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड कैन नॉट कैरी द न्यूक्लियर। एक एक टॉपिक देखते हैं। इसका आंसर बेसिकली ए है। इट इज अ कस्टमाइज एंड नेवल वेरिएंट ऑफ द पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी 2। फर्स्ट ऑप्शन, it is a naval variant of the indigenously, is a naval variant of indigenously developed Prithvi 2 missile. Then declared strike range of the 350 kilometer. Here we have in the option number 2 is a 700 kilometer, but actually it is a 350 kilometer range. So that range must be remember. यहाँ पे range थोड़ी ज्यादा दी हुई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 3, it can be launched from the aircraft. This option is also wrong. It is a ship to ship. ठीक है, it is specially designed for the navy. It is a ship to ship and ship to surface. ठीक है, it can be launched from the aircraft,
ship to ship and ship to surface. Then it is a short-range ballistic missile capable of carrying nuclear as well as conventional warhead. It is a short-range ballistic missile capable of carrying nuclear as well as conventional warhead. These are the four options. So, in these four options, option number one is correct. Is a customized naval variant of the Prithvi missile, then declared strike range of 350 km, ship to ship and ship to surface strike. It is a short range ballistic missile capable of carrying nuclear as well as conventional warhead. Okay, so this is first question. So option number A correct. इतना ही याद रखो surrounding. Then next is Prithvi 2 missile. Prithvi 2 missile. It is a nuclear capable ballistic missile. Prithvi 2 missile. It is a nuclear capable ballistic missile. Option number A. Though it has maximum range of 100 kilometer, or think it is the first native made ballistic missile. Option number C correct. It is a India's first native made ballistic missile. So option number 3 कहाँ पे वहाँ पे नहीं है. ठीक है. So remaining तीन option देखते हैं. Option number C. It is Prithvi is part of the IGMP. IGMP हमें पता है पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और लास्ट वन इज और आकाश. ठीक है. इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ टैक्टिकल. पृथ्वी टू इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. सरफेस टू सरफेस. पृथ्वी टू इज सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी टू. Then it has a range between the 150 to 300 kilometer. 150 to 300 kilometer range है. Then it is India's first indigenously ballistic missile. It was India's first indigenous ballistic missile है. 3. तो बराबर यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग. यहाँ पे रेंज फ्रॉम द 150 to 300 किलोमीटर. ठीक है. डिपेंड 150 to 300 किलोमीटर है. सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल range from 150 to 300 kilometer. Then it was indigenously developed ballistic missile. So option number 2 wrong है. तो यहाँ पे this option also going to cut. So option C is the answer. Then next अग्नि मिसाइल. पटना में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश. उसमें से अभी दूसरा देखते हैं अग्नि मिसाइल. अग्नि मिसाइल आर लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. अग्नि इज लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. अग्नि के अलग अलग वर्जन है. अग्नि 1 जिसकी लगभग रेंज 700 से 800 किलोमीटर है. देन अग्नि 2 उसकी रेंज नियर अबाउट 200 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है. अग्नि 3 रेंज ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर है. अग्नि 4 has range about 3500 kilometer and can be launched. Then अग्नि 5 में क्या है नियरली 5000 किलोमीटर तक है. एंड लास्टली अग्नि 5 is most advanced surface to surface ballistic missile. It is the most advanced. Then Agni Prime is canisterized missile range of 1000 to 2000 kilometer and it replaces the Agni. It will replace Agni 1 missile. This is Agni Prime. Is a canisterized missile with range of 1000 to 2000 किमी. ओके. तो ये पूरा क्या है
अग्नि मिसाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि प्राइम। अभी अग्नि प्राइम अग्नि 1 को रिप्लेस करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू द IRNSS सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। IRNSS is a constellation of 5 satellites. It is a constellation of 5 satellites which were launched by the PSLV. What is meant by the IRNSS? IRNSS is one of the local GPS systems. Local GPS system. It is a global positioning system of India, nothing but. It is India's GPS. IRNSS is constellation of 5 satellites which were launched by the PSLV. It is an independent regional navigation satellite system designed to provide a position information in the Indian region. It is an independent regional navigation satellite system designed to provide position information in the Indian region. Okay. Second is correct. It is a constellation of 5, not 5, it is a constellation of the 7 satellites. 3 satellites can be launched in a geostationary orbit and 4 satellites can be launched in a geosynchronous orbit. Geosynchronous orbit, and 3 satellites can be launched in a geostationary orbit. These are the 7 satellite constellations. So option number 1 is wrong. But all these 7 satellites are launched with the help of the PSLV. So this second point is, second half is correct of the option number 1, but first half is wrong. It is not constellation of 5, it is constellation of 7 satellites. That's why first option is wrong. Then second, it is an independent regional navigation satellite system designed to provide position information in the Indian region. Yes, it is correct. So option number is 2 correct. So we will discuss more about the IRNSS system. What is mean? What is the exact detail of the IRNSS? Indian Regional Navigation Satellite System. It was renamed in the year 2016 after launching of the 7 satellite. That is the navigation with the Indian constellation. So Navik was the new name of the IRNSS, which was given in the year 2016. Okay. Then in the Navik satellite system, there are basic 7 satellite systems of the first generation. These are the first generation 7 satellite IRNSS 1B, which was launched in the year 2014 to still the last satellite IRNSS 1I, which was launched in the year 2018. So these were the 7 satellite constellation. Again, now we start, or we have upgraded this program by launching the NVS satellite, NVS-1 second generation satellite in the year 29th May 2023 with the help of the GSLV, and we have starting to upgrading their lifespan of these satellites. Basically, the IRNSS 1B, C, D, E, F, G, I, ये जो series है, their lifespan is 10 years, and now NVS-01 has the lifespan of 12 years. That's why we have started this new series, second generation series, for the more capacity building of the RNSS system. Basically, it provides the global GPS system up to the 1500 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, पूरे इंडिया में और उसके सराउंडिंग 1500 किलोमीटर तक ये प्रोवाइड कर सकता है. बेसिकली प्रेजेंटली वी कैन यूज इट फॉर द डिफेंस पर्पसेस. Then next, first India to export a BrahMos missile to which country? BrahMos missile किस कंट्री को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया? तो फिलीपाइंस को किया. ये ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन याद रखो, फिलीपाइंस को एक्सपोर्ट किया. व्हाट इज द BrahMos? BrahMos is a joint programming. First set of BrahMos missile is anticipated to reach the Philippines by the end of the March. So this is the basic information.
Basically, BrahMos is one of the supersonic cruise missile. BrahMos is a supersonic cruise missile, which is a joint venture of the India and Russia. Is a joint venture of India plus Russia. So we must remember that it is a joint venture. Then it is developed by the DRDO. It is developed by the DRDO and Russia's NPOM. DRDO and NPOM. It is a stealth technology. In the BrahMos missile, they using the stealth technology, then operate the fire and forgot principle. They operate the fire and forgot principle against stealth technology, and it is a supersonic cruise missile. And lastly, it can be launched from the land, aircraft, ships, and even submarines. So this is the multi-purpose, multi-use BrahMos missile. It is for the army, navy, air force, and even it can be launched from the submarines. So very important. This BrahMos is one of the now major strength of the Indian defense system. Thank you so much for watching this video and keep watching. Please subscribe the channel, share it to other friends, and also press the bell icon for the further notification. Thank you so much. Stay tuned with us for the current affair lecture series.